Hello and welcome. You're watching DD India Live. I'm Gautam Roy. Coming up in the next 30 minutes. At least 18 bodies recovered after US Army chopper collides with a passenger plane over frozen Potomac River in Washington, D.C. President Trump says tragedy should have been prevented. All 8 hostages set to be released as part of the third round of the first phase of the ceasefire deal with Israel, either released in Israel or are with the Red Cross. And economic growth in the Eurozone shudders to a halt in the fourth quarter, dragged by contractions in major economies like France and Germany. But first up, an American Airlines flight collided in midair with a helicopter in Washington, D.C. on Thursday, with both crashing into the Potomac River. The jet, which was coming from Wichita, Kansas, was carrying 60 passengers and 4 crew members, and 3 U.S. Army soldiers were on board the military helicopter. About 300 emergency responders were pushed into rescue mode, with police divers and boats searching the waters and the icy waters really for survivors in windy and dark conditions. According to police officials, 18 bodies have been recovered so far, but there is no official update on the number of casualties. Meanwhile, the Federal Aviation Administration has ordered the grounding of all planes at Reagan National. And US President Donald Trump has said in an official statement he had been briefed on the terrible accident and thanked emergency responders for their incredible work. In a social media post, President Trump said, and I quote, "The airplane was on a perfect and routine line of approach to the airport. The helicopter was going straight at the airplane for an extended period of time. It's a clear night. The lights on the plane were blazing. Why didn't the helicopter go up or down or turn? Why didn't the control tower tell the helicopter what to do instead of asking if they saw the plane? This is a bad situation that looks like it should have been prevented, not good." And the 3 principles I talked about and terming the incident as absolutely tragic, U.S. Restore the warrior ethos in everything that we do. The research and rescue efforts are ongoing, and an investigation has been launched immediately by the Army and Defense Department. And the chief executive of the American Airlines expressed grief over the Washington, D.C. crash, in which an American Airlines aircraft was also involved. I'd like to express our deep sorrow about these events. This is a difficult day for all of us at American Airlines, and our efforts now are focused entirely on the needs of our passengers, crew members, partners, first responders, along with their families and loved ones. Now let's take a look at the last 10 deadly airline crashes that have taken place in the U.S. In 2009, a Colgan Air turboprop crashed on approach to landing in Buffalo, New York, killing all 49 people on board and 1 person on the ground. In 2006, a Comair regional jet overran the runway when taking off from Lexington, Kentucky, and crashed, killing 49 of the 50 people on board. In 2005, a Chalk Ocean Airways turboprop crashed after takeoff from Miami, Florida, killing all 20 people on board. In 2004, a Corporate Airlines turboprop crashed on approach to landing in Kirksville, Missouri, killing 13 of the 15 people on board. In 2003, a U.S. Airways Express turboprop crashed after takeoff from Charlotte, North Carolina, killing all 21 people on board. In November 2001, an American Airlines jet crashed after departing from John F. Kennedy International Airport in New York, killing all 260 people on board and 5 on the ground. And on the 11th of September 2001, a hijacked American Airlines jet departed from Boston and crashed into the World Trade Center building in New York, killing all 92 people on board, and around 1,600 people also died on the ground.
Now, in a major development in the U.S. immigration policy, President Donald Trump has signed the Laken Riley Act, named after a Georgia college student tragically murdered last year. The Trump administration has also ended extended protections for Venezuelans, and facility in Guantanamo is also being prepared to serve as a transit or detention center for illegal migrants. Let us listen into this detailed report by Aarti Rana. In fact, we'll get to that report a little later. Right now, we're cutting across live to a remembrance of the father of the nation, India's father of the nation, Mahatma Gandhi. It's his death anniversary and an all-prayer meeting. As you can see, Prime Minister Modi is in these live images, India Prime Minister, coming in to attend that all-prayer meeting at the very place where Mahatma Gandhi was assassinated. This is New Delhi's 30 January Marg.
सकल तीरथ तेना तन मारे, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराए जाने रे, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराए जाने रे, पर दुखे उपकार करे तोए, पर दुखे उपकार करे तोए, मन अभिमान ना हारे रे, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराए जाने रे, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराए जाने रे। सकल लोक मां सहुने वंदे, सकल लोक मां सहुने वंदे, निंदा न करे के नीरे, वाच काच मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेरी रे, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराए जाने रे। समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, पर स्त्री जेने मात रे, जो भात की असत्य न बोले, पर धन नव झाले हाथ रे, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराए जाने रे, पर दुखे उपकार करे तोए, पर दुखे उपकार करे तोए, मन अभिमान ना आने रे, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराए जाने रे। सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम, सीताराम सीताराम, भज प्यारे तो सीताराम, सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, रघुपति
देवियों सज्जनों, संध्या के 5:17 हो चुके हैं। यही वो समय है जब 30 जनवरी 1948 को बापू ने यहीं अंतिम सांस ली थी, हे राम कहते हुए। आइए हम सब अपने अपने स्थान पर खड़े हों और 2 मिनट का मौन रखकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को मौन श्रद्धांजलि दें। आई विल रिक्वेस्ट ऑल प्रेजेंट हियर टू प्लीज अराइज टू पे 2 minutes silent tribute to Father of Nation, Mahatma Gandhi. ओम शांति, ओम शांति। देवियों सज्जनों, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार, साथ ही माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी और अन्य विभूतियों का भी आभार इस अवसर पर गरिमामयी उपस्थिति के लिए। गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति की ओर से आप सभी का आभार इस कार्यक्रम में गरिमामयी उपस्थिति के लिए। बापू कहा करते थे, सभी धर्म एक ही शिक्षा देते हैं, बस उनके दृष्टिकोण अलग अलग हैं। बापू अक्सर कहा करते थे कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। आज पूरा देश बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है और इस वक्त माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी विभिन्न धर्मों के अनुयायियों से मिलते हुए बापू का मानना था कि भगवान का कोई धर्म नहीं और इस समय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बच्चों से मुलाकात करते हुए गांधी जी का बच्चों से अटूट स्नेह था। उनका मानना था कि बच्चों के कोमल मन में अगर सत्य और अहिंसा का बीज रोपित कर दिया जाए तो वह निश्चय ही एक भरपूर पेड़ बनकर पनपेगा।
people from all walks of life present here. This is the poignant occasion. Yet, everyone is happy to greet the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji. महात्मा गांधी कहते थे कि परमात्मा का कोई धर्म नहीं होता है। जो व्यक्ति दूसरों के दुख दर्द को समझता है, असली धार्मिक वही है। धर्म के लिए लोग अपनी पूरी उम्र जीते हैं। उनका धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित था। गांधी जी के लिए सत्य ही उनका भगवान था। महात्मा गांधी सर्वधर्म समभाव पर विश्वास करते थे। और आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से बच्चे बहुत ही स्नेह भाव से मिलते हुए और उसी स्नेह भाव से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बच्चों से मुलाकात करते हुए। गांधी जी ने कहा था कि आज सच्ची आवश्यकता एक धर्म की नहीं है, बल्कि विभिन्न धर्मों के अनुयायियों के बीच परस्पर आदर और सहिष्णुता की भावना रखने की है। हम सब धर्मों के बीच जड़ समानता की स्थापना नहीं करना चाहते, परंतु विविधता में एकता की स्थापना करना चाहते हैं। इस समय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी यहां उपस्थित लोगों से मुलाकात करते हुए, people from all walks of life are present here. This is a poignant occasion. Yet everyone is happy to greet the Honorable Prime Minister of India. बापू ने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर आजादी की जंग लड़ी और भारतीयों का मार्गदर्शन किया। आज का दिन हमें बापू के विचारों पर गहन चिंतन करने पर विवश करता है। बापू का मानना था कि सुबह पहला काम ये करें कि दिन के लिए संकल्प करें कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, मैं केवल भगवान से डरूंगा, किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं। सूरज ढलने के साथ ही ये कार्यक्रम अपने समापन की ओर पहुंच गया है। सोचा जाए That was the remembrance of Mahatma Gandhi, father of the nation, India's father of the nation, who was assassinated on this very day. On that spot itself, now it's called 30 January Marg in New Delhi in 1948. And that's how a nation is paying homage to Mahatma Gandhi on the anniversary of his death. That's all we have for this edition of DD India Live, but let us know your thoughts on the news of the day. And for those on the go, you can get all the latest news and updates from India and across the world on DD India's mobile app. It's available on both Android and iOS. You can scan the QR code on the screen to download the app right away. And we'll be back with more news as it breaks here on DD India. I'm Gautam Roy, and from all of us here in Delhi, thanks for watching DD India Live.